University of Delhi, as well as being expert of different university, or as well as the Ministry of different ministries as an expert. So in this way, he is looking lot of things simultaneously. And today we have invited him to say a few words in front of you, because after your graduation, which subject you want to choose, where you have to go in looking these things, I have invited him as a speaker. So sir, welcome, and अपनी बात करते हैं sir कि हमारे Uh, बच्चे आप सुन सके. Please sir, thank you. thank you. Thank you, Abdesh Kumarji, Mr. Abdesh Kumarji, teacher in charge of the college. And I came to know that you are teaching a very, very important topic, that is environment. When you were talking about environment, I was reminding that when this department was started, this department was basically started in 1977 uh, with having adult education program in the colleges and population education club. When I remember population education club, population education, environment, and sustainable development was the part and parcel of the, our population education in higher education program. So I could just see that this is the linkages of our that program that was started in 1977 by the University Grants Commission. Why it was started, I just repeat, because our participant today are the by and large third year student of Delhi College of Arts and of your college, and also they have opted environment issues, and they are from other BA program group also. So I am very excited to discuss, participate in this program where our young participants are there, who are the future of our country, who are the future of our university, and especially when the University of Delhi is going to celebrate 100 years centenary year in 2022. So the future of any country, especially we are during the crisis period of COVID-19, but still I say with all of conviction that the future of any country depends upon the young or youth who are connected today for today's program. What I wish to discuss, few things about my institution, from where I belong, and then certain things about the courses that we are offering, so that in course of time our students can link with that program in future. You see, as it is said that currently the name of our department is Department of Adult Continuing Education and Extension, but basically the nomenclature is Department of Lifelong Learning and Extension. So once you go Chandigarh, Jammu, and other places, the name is not Adult Continuing Education. It is in 11th 5-year plan, that is 2007 to 2012, Department of Lifelong Learning and Extension. You see, our department offers master degree in lifelong learning and extension. You are the students of history, political science, BA program, other subjects also. But I am talking a subject which is a quite new to you. What I am talking? I am talking about MA, Master Degree in Lifelong Learning and Extension. I am the founder member of this course, MA in Lifelong Learning and Extension, when it was started in 2012. Myself, a first student of this department in 1984, when it was offering postmaster's diploma in adult continuing education. After that, the post MA diploma was discontinued in 2011-12, and I have converted it in MA in lifelong learning and extension. And I have requested your teacher in charge just to have a session with you, so that I can let you know the prospects of MA in lifelong learning in India and University of Delhi. What are the prospects I'm talking about? What is MA in lifelong learning and extension?
at this stage, what we say that learning is a continuous process. We have never thought that in 21st century the world including India, will be caught in COVID 19, and we all will be quarantined, only linked with the online teaching and learning process. We were never. We are always eager to see our teacher in the classroom, accepting him or her as a guru, and having the class interaction with our peers, going to common room, going to cultural fest, and going to other places. But what a time! We all are quarantined in our home to our relatives or one place, and we are advised not to go to our college. We are advised not to go to our relative, and we have to learn a alternative way of online teaching and learning through the digital mode in rural area, in urban area, in all parts of the country, and we have no option to know. So, what I wish to say that learning is a continuous process. Learning has no age boundary. Learning has no caste boundary. Learning has no gender boundary. Learning always starts at all the spheres. Look at my stage. Look at me or my age. I have to learn the various online things, though I may not be learning. So a 5 6 year boy comes and teaches me certain things which I may not be knowing at this stage. So, lifelong learning, the topic that I am introducing, is going to teach you, going to let you know that learning while earning. You are something earning also, you are learning also. Continuously, you are learning. So, learning for what? If we talk about UNESCO, UNESCO talks about learning has four paradigms. Lifelong learning has four paradigms. Why we learn? The first thing of our learning, whether we learn environment, whether we learn anything, the first thing of our learning is learning to know. We want to learn something, we want to know something. This is why we learning to know something, knowledge. This is why in 2009 we have even a knowledge commission. The world today is just knowledge of the medical sciences, knowledge of the health sciences. So knowledge is power. Knowledge is power today. Learning to do. Why we wanted to learn? We wanted to do something in our life. Unless we do, our theory does not become work. This is why in our system we only do not read only. It was said, your teacher-in-law just now, that you have to present also. You present by your PPT, you present through your oral medium, you present to your online medium. Presentation is part and parcel of our learning. It is a kind of internship. It is a kind of practicum. It is a kind of hands-on experiences which we used to show. Only one way teaching, which a Brazilian philosopher Paulo Ferri used to say that teaching should not be monologue. It should be participatory. It should be democratic. It should be a dialogue. A student is not a open passbook where you can just deposit something. It is not a depository. It is a two-way process. It is a learning process. It is a dialogue. So learning to know, learning to do, learning to be. You wanted to be something in your life, maybe teacher, maybe a cultural expert, maybe a sports kind of a thing, maybe in some incubation kind of a thing, maybe a innovator, maybe something startup kind of a thing. You can start, you can do anything, whatever you like in your life is learning to be. And the most important thing, equally important thing, the last and most important part of the pillar is learning to live together. As a human being, as a living being, we are not living for ourselves. We are living for our family. We are living for college as a family. We are living for university as a family.
We are living for nation as a family, and we are living for globe as a family. So learning to live together, no boundaries of caste, no boundaries of gender, no boundaries of religion, overcoming all boundaries, we are here to live together. So our master degree in lifelong learning and extension, when I have envisaged what you call in 2012 and implemented from 2013 itself, we have given a local experiences, we have given a global experiences where the Western countries experts used to come to our department, teaches online, offline on the various parts, various manifestations of lifelong learning, and a kind of a interaction online, offline, through visiting to our teachers used to visit to the various countries, their country, various countries, teachers and students coming to our department and having a interaction on that kind of a thing. So MA in lifelong learning and extension provides a basic capacity of reading, writing, and simple arithmetic. Has the basic capacity of reading, writing, and simple arithmetics is a literate person, a basic minimum kind of thing. But is a literate person an educated person? No. A literate person is not a educated person. Education means the first and foremost pillar is literacy. Yes, we are literate. We have three R's: reading, writing, and simple arithmetic. We have awareness, kind of thing. Awareness towards ourselves. Are we aware towards ourselves? First and foremost thing, what we call about the self reliance, self awareness, building the self during the COVID 19. The thing that the psychologists used to talk about, building our self esteem, setting the goal, having the goal, a provision. So awareness about self, awareness towards our family, awareness towards entire country and globe is the second part of our engagement. And this is why you have environment paper with the Supreme Court made it mandatory. Why it is made it mandatory? Because environment, where everything, from water to soil, to plantation, to all parts of the thing which your respectable teacher in charge used to discuss through theory and interaction, what he used to say, that the importance, we celebrated the earth, the importance of being the earth, the importance of being plantation, the importance of living with the environment is currently everybody is talking about building the immunity. How we build your immunity, and immunity is linked to linking with our earth and environment, a very important thing. So that kind of a awareness is required for sustainable social development. And third thing is employability, literacy, awareness, and employability. What is employability? Employability is not like me and your teacher in charge, that we are, you see, we are employed somewhere. A housewife is also employed. A agriculturalist, a farmer is also employed.
A rickshaw puller is also employed. A plumber is also employment is not only employment in the organized sector. Employment is organized sector, unorganized sector, in domestic front. At every person who is contributing something in the economically, either in economic kind of a thing, either in organized sector or in unorganized sector. As you know, that more than 92% of our Indian population are in unorganized sector. So those unorganized sector, those farmer, those domestic workers are contributing a lot for our socio-economic development. You cannot say they are not employed. They are also employed. That UNESCO made several small films and let us know that employment does not mean only a government job. Employment means your economic engagement with any way, any type of engagement you have in the system is very important. So all these things we used to teach us through our master degree in lifelong learning and extension as the part of extension as the third dimension. Very quickly, I used to say that extension, what we do in our university and colleges, we do undergraduation, do post graduation, we do MPhil, we do PhD. In new education policy, there is no MPhil. So what we used to do that we have undergraduate and postgraduate program, and also we have researches. So we do researches. Why we do researches? Researches is creation of knowledge. We create knowledge. We create knowledge through discovery, inventions, and other kind of things you see. Social scientists also used to discover, used to invent in the society. For them, society and community is the laboratory. For social scientists and for humanity, for social scientists and humanity. In the teaching, what we do, that in the teaching, we create the knowledge for teaching, kind of a thing. Whatever we undertake in researches, they are experimented in the classroom. Suppose you are taught environment in the classroom, but what about those who are living in the community, who are not there in the university and colleges? How you teach them? You go to the community, you go to the society, and you teach them the importance of environment, the importance of planting a tree, importance of health and hygiene, importance of cleanliness, importance of being safe, importance of building the self-esteem. All these things you provide them as part and parcel of extension. So it is our duty as third dimension in extension in university system, because university is not only a ivory tower where only UG or PG student or research scholar used to come. We are part and parcel of the society. So society as a large, so community as a large has a right to know the fruits and findings of the researches which through which undergraduate and postgraduate students are being brought. So we are the institution, we are the department where we linked our fruits of the researches and teaching to the community at large through the community participatory researches. So in the researches, we used to do the community based research which our master degree provide the opportunity. So I know that you have a class. I do not have to speak too much today. So I will just make a beginning and will invite some of you to kindly see our website of Department of Adult Continuing Education and Extension, where it talks about that we offer MA in lifelong learning and extension. We offer the short term course counseling and guidance. We offer the course travel and tourism. We also started offering English language proficiency course. Along with that,
as short term intervention, we will have courses on corporate linkage and social responsibility. We will have courses also on research, project formulation, and evaluation kind of a thing. So these are the very important aspect of educational intervention. What the employers today need? Employers today need knowledge. Employers today need skills, that you have writing skills, you have soft skills to communicate, you have negotiation skills, and you have also technology based skill, online skills, offline skills, so that you can mediate the technology. These things are very, very important. Citing one example, I was there in government of India to select the consultant. While selecting the consultant, what I was looking for, they will be sitting to Ministry of Social Justice and Empowerment, and which as part of the selection committee I was looking after, that the young talent have the soft skills to speak, they have power to implement, they have power to what you call make PPT, they have power to quick presentation, they have power to make the proposal or research proposal. All these things we try to make in our courses. So our courses, MA in lifelong learning and extension, is not a only a traditional course like history, political science, botany, zoology, and other things. It is a untraditional course. It is a professional course which provides you hands-on experience to know, to experiment, to interact with the teachers inside and outside, with the entire globe, and to provide you the opportunity for all kinds of a experimentation, so that you can work as a teacher, you can work as a corporate member, you can work in voluntary organization, you can work in professional organization. Such skills which are needed for the employment, that skills are being provided through the professionals, through the teachers in our course. So I have a lot many things to say, but at this juncture, I what I say that to your young mind, that I am very happy that I am just addressing a very talented students of a very important college of University of Delhi. I wish you all success in your life. I am really thankful to your teacher in charge for providing me the opportunity. As a teacher, I can continuously go on, but by my idea is just to provide you a simply a flavor of what our department used to provide us. And as a founder member, as a first student of the department, I had initiated all these things, and I welcome you to be part and parcel of our venture. Thank you to your teacher in charge, and thank you for your patient hearing. Thank you, sir. Thank you, sir, for your enlightening lecture on adult education and continuation. Students are also saying a lot of thanks to you. And yeah, now I think if someone is having any query to sir regarding your MA admission, what is the process that admission test or something, what? So anyone is allowed to say or ask the query. I think yes. Sonali, I think if people or Arika, Abdur, whosoever is looking forward for any answer, what Sir, is, yeah, Yeah. Aridhi, sir, what is the ROI? For example, what kind of jobs will we get after the masters, and plus, what is the process of joining? yeah, You sir, know, please. as other postgraduate program, our test is also taken by National Testing Agency in MA in Lifelong Learning and Extension. And questions in this are from humanities, social sciences, and commerce, because it is interdisciplinary and multidisciplinary. Any student from any discipline can apply
for our master degree in lifelong learning and extension is the first thing. Second thing, that almost more than 50 60 universities this department is there. We are trying to make it a part of undergraduate program. Some papers are offered at undergraduate level. So teaching and our we have MPhil and PhD program. So opportunities in researches are also there. Our students are there in ministries, in various departments, in various professional organizations as a consultant, as a advisor, as a senior consultant. Several our students are running their own organization, their voluntary organization, their professional organization, and some of them are 100 as their staff also. They used to employ us on part-time basis also, some of our students. So you can have incubation kind of a thing also. You can go to corporates, you can go to professional organization, you can start your own venture, and also you can have the researches, and you have other opportunities as there in the department. Such kind of opportunities are offered in our MA and lifelong learning extension. Yeah, thank you. In fact, this is the department where you will come to know about the gap between the employer and the employability, what the sir is talking about, what type of skill the employers are looking for. And this is an institution where you will get this skill to fulfill their requirement. I think I'm true, sir. Yeah, you are very right. You are very right. That kind of a incubation is there, because what is the gap? That is very very important to know, Very that we are degree. Thing is that nowadays, you all know it is not very important that we have certificate, degree, and diploma. Huh? In the changing paradigm, I also on WhatsApp used to get several, opportunities, but I have to see that whose name is to be recommended. And when we recommend the name, it is not only seen that he or she is PhD, is MPhil or MA. You used to see the skills, what skills are needed, and that skills are there or not. So I'm very thankful to Avdesh ji that he has hinted a very important area, that we used to bridge the gap between what is required in the employment and what we have there. So that kind of a interface opportunity we used to provide. Here, Ravi Ranjan Kesri is there. He is the students organization president, I think, of our college. So, Ravi, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। हाँ, तो सर अभी तुम थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो। इनफैक्ट आज हम लोग अपने इस प्रोग्राम में, अपने क्लास में हमने आमंत्रित किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से लाइफ लॉन्ग लर्निंग के एचओडी प्रोफेसर राजेश सर को। और वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी ग्रेजुएशन के बाद से हमें जॉब की क्या जरूरत होती है और किस तरह से हमें जॉब मिलेगा। और भी आपके बीच में कुछ सवाल हो तो रख सकते हो। ओके सर, हाँ रवि थैंक जी, यू पूछ लो। सर। जैसे कि मुझे अभी बीए प्रोग्राम में हूँ मैं, हिंदी जीके मेरा वो है, हम्म
मतलब डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, तो मैं इसके बाद क्या क्या कर सकता हूँ एमए के देख लिए? देखो, इसके बाद तुम कई जगह अप्लाई कर सकते हो। हमारे यहाँ एमए इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन में कर सकते हो, एमएसडब्ल्यू में कर सकते हो, या बाकी कोई डिसिप्लिन रिलेटेड चीजें जो है जिसमें तुम ऑलरेडी कर रहे हो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट से, उसमें तुम कर सकते हो। बाकी और उसके बाद कंपटीशन डिपेंड ये कर रहा है कि तुम्हारी क्या चॉइस है करने की। तुम क्या करना चाहते हो। तो फर्स्ट चीज ये होना चाहिए कि हमें अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि हम किस कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, किस करियर की तरफ जाना चाहते हैं। वो हमारा जो है फर्स्ट रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव बना के करना चाहिए। और जो अपॉर्चुनिटी हम लोग कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने की, वो ये होती है कि जैसा कि इन्होंने ठीक बताया कि हम उस गैप को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट हमको एक एम्प्लॉयमेंट की है, तो उसके लिए हमें क्या स्किल्स, क्या क्या चीज चाहिए। एम्प्लॉयर को, जैसे आप देखो, हम जो भी कोर्स देते हैं वो एम्प्लॉयर को भी भेजते हैं, इंडस्ट्रीज को भी भेजते हैं, पेरेंट्स को भी भेजते हैं, और हम वो कोशिश करते हैं एज पर देयर नीड हम उसको ऐसा बना सकें जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारे सिस्टम में रवि, जो चीजें होती है कि हम ज्यादातर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री ओरिएंटेड है। अभी भी हमारे पास लोग आते हैं, सर हम हमारा किसी तरह एमफिल में हो जाए, किसी तरह एमए में हो जाए, लेकिन सारे लोग जो हैं एडमिशन के बाद उतने एक्टिव नहीं रहते। उतना इंपॉर्टेंट हो के काम क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको लगता है चलो इसमें भी एडमिशन ले लिया, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, 10 चीजें कर रहा हूँ। तो पहली चीज ये होना चाहिए, हमें अपने करियर पे फोकस्ड होना चाहिए। फोकस्ड कैसे होते हैं, वो साइकोलॉजी की क्या नीड है, उन चीजों को हम बताते हैं। नेशनल ग्लोबल लेवल पे लिंकेजेज बताते हैं। बच्चों को वो तैयार करने की कोशिश करते हैं जिससे उनको अपने ऊपर एक विश्वास पैदा हो जाए। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं रवि, जिसमें कि हम, बाकी तुम कई तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो, कंपटीशन से लेकर के हमारे एमए इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, एमएसडब्ल्यू में, बीएड एमएड में, तुम ट्रेडिशनल कोर्सेज में कहीं भी अपने ओपनिंग दे सकते हो। डिपेंड कर रहा है कि तुम किस एरिया में जाना चाहते हो, वो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव बना के आगे बढ़ने की कोशिश करो। बेस्ट ऑफ लक। हाँ सर हाँ हाँ रवि बोलो। सर जैसे कि मैंने सोचा है हिस्ट्री या हिंदी से करूं, तो हाँ, उसके लिए फिर एमए करने के बाद क्या मतलब उसमें कोई भविष्य है? सही से दिशा निर्देश कुछ? नहीं नहीं रवि, तुम गलत जगह पे सवाल कर रहे हो। ऐसा है कि आप एमए इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे हम लोग बात कर रहे हैं, और ये नहीं, समझ लो अवधेश जी, मैं इसको भी ये कहूंगा, अवधेश जी, हाँ कि जी सर ठीक जी। है, देखो सबसे बड़ी चीज है, जो हिंदी हो हिस्ट्री हो, सब में भविष्य है। अच्छा, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में भविष्य नहीं है। हिंदी में भी भविष्य है, हिस्ट्री में भी भविष्य है, हमारे यहाँ भी भविष्य है। डिपेंड है जो कोर्स हमने लिया है उसके साथ हमारा ट्रीटमेंट कैसा है। ट्रीटमेंट माने हम उसमें कैसा पढ़ते लिखते हैं, कैसा हम टीचिंग करते हैं, कैसा हम रिसर्च में एंगेज होते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला चीज हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करके फिर हम उसमें लगन के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। कई बार हम होते हैं हाफ हार्टेड होते हैं, यहाँ भी हो गए, वहां भी हो गए, वहां भी हो। जब हम चीजों में कंप्लीटली इनगोर्स नहीं होते हैं, कंप्लीटली इंगेज नहीं होते हैं, तो हमें रिजल्ट भी हाफ हार्टेड होता है। तो हम जिस चीज में जुड़ना चाहते हैं, अगर हम उसमें सीरियसली जुड़ते हैं, तो हमको डिजायर रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। डिपेंड कर रहा है कि हमारा उसके साथ कितना ज्यादा इंगेजमेंट है, कितनी लर्निंग है, कितनी नॉलेज है, कितना स्किल्स है, और कितना हमारा नेशनल इंटरनेशनल लिंकेजेज है। तो उसके अनुसार हमारा फायदा रवि होगा। मुझे रवि, थोड़ा मैं बताऊं कि इस डिपार्टमेंट का इंटरनेशनल एमओयू भी साइन हुआ पड़ा है। अभी जर्मनी इस डिपार्टमेंट के कई सारे बच्चे भी गए थे वहां पे इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। और ये डिपार्टमेंट मतलब इंडिया के अंदर तो जेएनयू में भी ये डिपार्टमेंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो है, इस तरह से ये एक ऐसा ये डिपार्टमेंट है जिसका कि फ्यूचर ओरिएंटेड, एक कहते हैं ना कि नया डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ है। तो सर पहले स्टूडेंट है इस डिपार्टमेंट के दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
तो आप समझ सकते हो कि सर आज वहाँ प्रोफेसर हैं, तो मतलब इसका जो जेनेसिस है वो बहुत लेटेस्ट है। तो इस नाते इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, और लोगों तक जानकारी नहीं है, इस वजह से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अदरवाइज इसको एक नए स्किल के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है कि आज हमारे कंपनीज में या हमारे सेक्टर्स में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का है, वो सारी चीजें पहले से ही इस डिपार्टमेंट वो रिक्वायरमेंट के लिए चीजें आ जाती हैं, और फिर हमारे इस डिपार्टमेंट से वो अपना सिलेबस तैयार होता है उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है साइट पे ले जा करके, और क्लास में तो थ्योरिटिकल दी जाती है। शायद मैं सही हूँ सर? बिल्कुल। बल्कि मैं ये बताऊं, जब पहली बार हमने स्टार्ट किया था, तो हमने इंटरनेशनल प्रोफेसर डेनमार्क को 6 महीने के लिए गेस्ट में बुला के बिठाया, और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग वो यहाँ पर 6 महीने रह के पढ़ाते थे। और उनका पढ़ाई का स्टाइल में बताऊं कि क्लास के टाइम पे तो क्लास लेते थे, उसके बाद सभी बच्चों को ईमेल करते थे। मैं 2013 की बात करता हूँ। और उनको पता था कि भाई वो डेनमार्क है, कई बार उनकी अंग्रेजी समझ में नहीं है, तो कभी वो एक बच्चे के साथ जाते थे इंटरेक्शन के लिए, कभी दो बच्चे के साथ। तो मैं कहता था आप कहाँ भागे जा रहे हैं? प्रोफेसर सोरेन अगस्त एरस नाम है, आज भी वो हमसे जुड़े हैं और अभी भी ऑनलाइन क्लासेज वो लेते हैं डिपार्टमेंट के लिए। तो कहते थे कि ये हो सकता है कि मेरी बात लोगों को समझ में ना आए, तो जो स्लो लर्नर्स हैं या जिसको हमारी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, वो हम एक 1 by 1 उनको डिस्कस करते हैं, सो दैट कि हम 100% हम हो जाएं। क्योंकि 6 महीने के लिए इसी काम के लिए हम हैं, तो हमारी ये कोशिश है हम सभी तक पहुंच जाएं। तो हमारी ये कोशिश है। और हम बताएं, हमारा ऐसा डिपार्टमेंट रहा जहां कम से कम 60 बच्चे एमए और एमफिल पीएचडी के अब तक जर्मनी जा चुके हैं। टीचर सभी तो जा ही चुके हैं छोटे से डिपार्टमेंट के। हमारे डिपार्टमेंट साइंस ह्यूमैनिटीज सबके आते थे कि सर आप अपने डिपार्टमेंट वाले को क्यों भेजते हैं, दूसरे वालों को क्यों नहीं भेजते? हमने कहा भाई हमने एमओयू किया और हमको पता था कि भाई टीचर को तो सभी भेजते हैं, कोई ना कोई स्कीम लगा के चले जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट के लिए एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने टेक ओवर करते ही हमारी ये कोशिश है कि फिर स्टूडेंट और स्कॉलर के लिए जरूर एमओयू बने और वो अपॉर्चुनिटी बन पाए। टीचर्स तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। स्टूडेंट स्कॉलर को नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। और अब जब वहां गए तो 100 यूनिवर्सिटीज के लोगों के साथ इंटरफेस उनका हुआ, तो बिल्कुल ग्लोबल उनकी ओपनिंग हुई। फिर उन्होंने देखा कि हमारे सिस्टम में क्या कमी है, उनके सिस्टम में क्या स्ट्रेंथ है, हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या सिखा सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने दी और आगे भी हम लोगों की देने की कोशिश रहेगी, जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा अपने आप में। जी सर, धन्यवाद। रवि, अपने तरफ से सर को धन्यवाद दो, और आई थिंक सर का हम लोगों ने कि मतलब इंग्लिश नहीं या नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल है। हाँ, अच्छा। हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश हिंदी दोनों वाले बाइलिंगुअल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू रवि, थैंक यू। Sir, so also on behalf of our department and the college and this environmental issues as a paper, thank you, sir, for your great lecture and enlightening us about the future of this department. और आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक मुझे यू भी सर। अच्छा लगा आपके साथ और टीचर के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगा। और आगे भी आपको कोई सवाल हो तो थ्रू टीचर के या आप इंडिपेंडेंटली देखें, और हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके वेबसाइट को जरूर देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम और ऑलवेज आई एम ओपन टू यू। थैंक यू थैंक फॉर यू सर। गिविंग मी such थैंक यू सर। opportunity, and you have implemented this when I talk to you, so I am highly thankful to you, highly thankful। सर सर हमारे Thank you। बच्चे भी आपको थैंक्स बोल रहे हैं सर, सब तरफ से। नहीं, थैंक यू। ओके सर जी। प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। ओके Thank you, sir. सो Thank you, sir. आई थिंक इट वाज a nice lecture by our speaker, और यस यही सर। मैं Yes, sir.
So in fact, we are the people who are only knowing about the one aspect of our study, our future study. That I'm from the history, or I'm from the mathematics, or I'm from the computer, or from economics. So only we are knowing the MA in economics, or Hindi, or history, and something like that. No, it is not like that. Nowadays, we have the different aspects of the reading where we are talking about the interdisciplinary subjects, and among them this adult education department of Delhi University is providing this opportunity to you all. And after, I think you all must know, go with the site of, I think I will also give the site name in the group also. But you will also search the Department of Adult Education, University of Delhi. Through that place, you will be able to find out what is the future aspects of this department here in Delhi University as well as in the JNU. And these two departments are leading department in the in India as well, and they are giving not only MA, as sir is telling us, that MPhil as well as the PhD, and the lot of future prospects are there. So this was my concern in front of you, that today is 25th, थैंक यू और सर सर आप लेके आए उनको स्पेशली। हाँ, इसीलिए मैंने आज आप लोगों को मैंने स्पेशली बुलाया था कि आप लोगों के सामने ये चीजें एक क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड बजा बताए हुए मैंने इस चीज को आया था। हाँ, देखिए, अच्छा ये देखो, तुम्हारे ग्रुप में लिंक आ गया, चैट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन का जो है चैट बॉक्स में देख लो आप लोग, dacee.du.ac.in, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो चैट बॉक्स से इस लिंक को लेकर के आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ रवि, तूने ज्वाइन किया हमारा इन्वायरमेंटल इशू। तुम हमारे डिपार्टमेंट के तो नहीं हो, लेकिन बीइंग स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट आपने ज्वाइन किया, सर थैंक्स। मुझे पता ही नहीं था पहले, नहीं तो मैं पहले ही अगर चैटिंग देखता ना वो ग्रुप का, तो ओके, फिर मैं पहले ही ज्वाइन कर लेता। वो तो हाँ अभी हाँ हाँ, अभी देखा तो मैं कहूँ ज्वाइन करूँ क्या, कुछ बहुत सीखने को बढ़िया। मिलेगा मुझे। नहीं नहीं, ये ऐसा है ना, ये सब्जेक्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है एडल्ट एजुकेशन, जहाँ की लाइफ लॉन्ग, मतलब हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन आप लोगों ने सुना है ना, राइट टू एजुकेशन टू 8 to 14 ईयर बच्चों के लिए। बिल्कुल सुना हूँ। ये, हाँ, तो ये डिपार्टमेंट जो है एडल्ट एजुकेशन, इसने राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल प्लानिंग किया हुआ है, और इसके ऊपर इन फ्यूचर हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट की कोशिश के बाद राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल भी हो सकता है। जो अभी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस था 8 to 14 ईयर बच्चों के लिए, अब जो फ्यूचर प्लानिंग है, और जिसके ऊपर मीटिंग भी हो चुकी थी इस यूपीए गवर्नमेंट में, कि इसको राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल किया जाए। मतलब एडल्ट लोग, मान लीजिए अभी भी हमारे यहाँ लिटरेसी कितना परसेंट है, मैक्सिमम 75, केरला में 90 के आसपास, मतलब 100% लिटरेसी तो नहीं है ना। सो इस डिपार्टमेंट ने कोशिश की थी कि इंडिया के अंदर लिटरेसी 100% लेके आए, और उसके लिए एडल्ट एजुकेशन जो कोशिश थी कि इसको हर उस आदमी तक पहुंचाया जाए जो कि लिटरेट नहीं हुआ है, तो वहां तक ले जाने की कोशिश थी। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट था, बट उसकी इनिशिएटिव में ये डिपार्टमेंट सेटअप हुआ, और फिर जा करके आगे चीजें चल रही हैं। तो एक अच्छा स्कोप है जहां से कि आप लोग MA इन एडल्ट एजुकेशन कर सकते हैं। और ये भी DU के एडमिशन के साथ ही अप्लाई होता है, टेस्ट होता है एग्जामिनेशन का, और जो लोग इंटरेस्टेड हों उनको थोड़ी बहुत गाइड भी कराया जा सकता है डिपार्टमेंट के थ्रू भी, कि किस बाकी तरह सब से। बाकी हाँ, सब साइड का लिंक मिल चुका है, तो मैं एक बार जरूर देखूंगा उसको अच्छे नहीं से। नहीं, एक ही बार नहीं आप देखोगे, बार बार देखते रहोगे, और हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट यही हो इन फ्यूचर। कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे बच्चे जो चीजें एक बार देखते हैं उनको आज आज एक ट्रेडिशनल चीजों पे जाने का मुझे नहीं लगता है कि हर कोई चाहता है। उसको एक डिफरेंट ओरिएंटेशन चाहिए, और सिंपल MA करके भी किसी को क्या हासिल होना है जब तक आप स्किल्ड बेस्ड नहीं होंगे। और इस डिपार्टमेंट ने अपने आप को स्किल तैयार किया हुआ है उस गैप को भरने के लिए, जिसको कि हम लोगों ने अभी कहा कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच के गैप को भरने का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कैसे उस गैप को भरा भरा जाए, और इस डिपार्टमेंट ने ऐसे शुरू किया है। देखो अब इस समय ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एनीवे, नितांशा, यू आर ज्वाइनिंग वेरी लेट, व्हाट इज द रीजन? Anyway, so that's all about the special lecture.
और हम लोग अब बात करते हैं फॉर प्रेजेंटेशन. यस, आई थिंक यू विल बी गोइंग टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन. यस सर. और आप, हाँ चलो अपना प्रेजेंटेशन दो. और आज और भी अच्छा, हाँ चलो 1 मिनट में इन सबका कुछ लोगों का अटेंडेंस है, जो लोग नाम के साथ जुड़े